Welcome to Math Dimensions. Today we are going to do solved examples of polynomials chapter of class 10 mathematics. The other videos related to basic concepts and exercises of NCERT are already uploaded on the channel. सॉल्व एग्जाम्पल्स बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आप बोर्ड पेपर्स को एनालाइज करोगे पास्ट फ्यू ईयर्स के आप देखोगे सॉल्व एग्जाम्पल्स बोर्ड में आते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल. It says the graphs of y is equal to p of x are given for some polynomial px. Find the number of zeros of p of x in each case. ये बहुत ही आसान है. अब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना है कि द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट विच कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स. द ग्राफ आई विल राइट इट डाउन फॉर यू. द graph intersects the x-axis at which x coordinate. x coordinate. सिर्फ ये ध्यान रखना है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट जस्ट वन पॉइंट, सो वी से इट हैज़ 1 0. दिस intersects the second part intersects the x axis at 2 points, so how many zeros does it have? 2 zeros. The third part it intersects the x axis at 3 points, so it has 3 zeros. Next part it intersects the x-axis, the linear polynomial intersects the x-axis here only at 1 point, so it has 1 0. Here it is intersecting x-axis only at 1 point, even if it's quadratic it has 1 0. The parabola, no. Next one, it's intersecting x-axis at 1 2 3 4, so it has how many zeros? 4 zeros. So that's how we find out the number of zeros in the given graph. Geometric interpretation for number of zeros. Let's come to example number 2. Question says find the zeros of quadratic polynomial and hence verify the relationship. आपको याद है क्वेश्चंस हमने किए थे. वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड. हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस किए थे. सो हम पहले इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं. x² प्लस 7x प्लस 10. प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए 10 और सम होना चाहिए 7. 5 and 2 आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन. वी विल गेट हियर x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. x कॉमन x प्लस 5 और यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे x प्लस 5. इसलिए हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए. एक है x प्लस 5 और दूसरा है x प्लस 2. देयरफॉर आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. Either and or. This implies x is equal to minus 5 or x is equal to minus 2 are the two zeros. Therefore, I can say one of the root is minus 5 alpha and the other root beta is minus 2. हम इन दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं जैसे हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी किया था. साथ में हम ए बी सी की वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं. a is 1 from here we check, b is 7 और c हमारा 10 है. इसको भी हम हाईलाइट करके लिख लेते हैं. फ्रॉम मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ भी निकल दी. अब हम वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन करने के लिए हमें करना है अल्फ़ा प्लस बीटा
is minus b upon a sum of roots, और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो वो है रियल -5 प्लस -2. -5 -2 गिव्स अस अल्फ़ा प्लस बीटा. यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा. ये मैंने अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा गलत लिख दिया है. यहाँ पे लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा. देयरफॉर विल राइट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7. और अल्फ़ा माइनस बी की क्या वैल्यू है? माइनस बी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू है 1. सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7. So you see these alpha plus beta value here, alpha plus beta value here are matching. Let's find out the value of alpha multiplied by beta. Alpha multiplied by beta c upon a है. यहाँ पे real alpha beta लेते हैं. Alpha beta -2 multiplied by -5 which is equal to +10. Alpha beta हमारा 10 आया. यहाँ पे alpha beta c 10 upon 1. Therefore alpha beta is also equal to 10. ये भी मैचिंग हो गया. It's very safe to write, hence verified. This is how we find the relationship between zeros and the coefficients. Example number 2 done. Let us see example number 3 now. Again, it's the similar question. Find the zeros of quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient. X squared minus 3. Same methodology we adopt. Dividing the page in two parts. Let's do x squared minus 3. Without factorization, can I write it as something like x whole square minus √3 ka whole square? A square minus b square gives me a plus b multiplied by a minus b. Therefore, value of x comes out to be minus √3 and x comes out to be plus √3. Out of these two, we can say alpha is minus √3 and beta is plus √3. Similarly, value of a here, coefficient of x square 1. There is no x, 0, b and c is -3. We highlight both of them, values of alpha, beta and values of a, b, c. After that, as usual, we do verification. In verification, we divide this into two parts. Let's see. First, we do alpha plus beta minus b upon a and alpha plus beta, the real values, minus √3 plus √3. So, alpha plus beta gives me 0. They both get cancelled, no? Similarly, minus b is 0 upon a is 1. So, alpha plus beta gives me 0. Alpha plus beta, both sides it's matching. Let's calculate alpha multiplied by beta. C upon a, alpha multiplied by beta, it is minus √3 multiplied by √3. It is equal to -3. So alpha beta is equal to -3 here. Alpha beta is equal to -3 upon 1 gives us -3. So here also alpha beta are matching and then we write hence proved. Same method repeatedly being given because it is repeatedly asked as well. Example number 4. Find a quadratic polynomial with given number of numbers as the sum and the product of its zeros being -3 and 2 respectively. Again a simple question. To find a quadratic polynomial, we remember
it is nothing but x square minus sx plus p, or I can write it as x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Here, what is alpha plus beta? Sum is minus 3, product is 2. Minus 3 and product is 2. We substitute the values in this equation. It becomes x square minus 3x plus 2. So our final answer will be x square plus 3x plus 2 is our beautiful answer. Thank you for watching. Math Dimensions is one-stop channel for concept-based learning and understanding, and also for preparation of board exams. Do like this video and also share and subscribe to the channel.